आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीं रुक जाए आसमां झुक जाए तेरा चेहरा, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए। तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं, जाने जा तू खफा हो जाए रात भी हो जाए, दिन तेरे आंचल में छुप जाए, छुप जाए, ये ज़मीं रुक जाए आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए। बनेगा स्वस्थ इंडिया के लॉन्च कार्यक्रम में मैं इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हूं और ये गोरखपुर का हाइजीन प्ले पार्क है। ये देश का दूसरा हाइजीन प्ले पार्क है और अभी आप देखिए कि ये हाइजीन प्ले पार्क में है क्या। हाइजीन प्ले पार्क में तमाम सारे जो साफ सफाई से जुड़े जो खेल हैं उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनको खेल के ज़रिए साफ सफाई के बारे में जानकारी मिले। बेटा ये अभी आपने खेला इसको, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जिससे हम लोग हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया गया है। हमें जल्दी उठने चाहिए, ब्रश करने चाहिए और हमें बात करनी चाहिए क्लीनली, फिर हमें वॉश करने चाहिए हेयर, वेयर क्लियर क्लोथ्स, वेयर योर स्लीपर्स, कट योर नेल्स एंड कॉम आवर हेयर। तो इससे हम हेल्दी भी रह सकते हैं और हैप्पी भी रह सकते हैं। इस हाइजीन प्ले पार्क में आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि वॉश हैंड वेल आफ्टर एवरी प्ले, यानी हाथ की साफ सफाई कैसे किया जाए उसके यहाँ पर तरीके बताए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चे इस पार्क में खेलें भी और उसके बाद में खेलने के बाद में जो हाथ धुलें की प्रक्रिया है उसको भी इस खेल के बाद में वो समझें। अमित शुक्ला हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अमित जी, इसके बारे में बताइए हमें कि ये बीए जर्म डिटेक्टिव इसका क्या आखिर काम है, ये बच्चों के लिए कौन कौन से गेम आपने बनाए हैं? एक्चुअली ये जो जर्म डिटेक्टिव है यहाँ पे ये है कि जब बच्चे पार्क में आते हैं बहुत सारे जब गेम्स करते हैं, गेम्स के बाद जो उनके जर्म्स आ जाते हैं उनसे कैसे उनको डिटेक्टिव करना है, कैसे उनको बचना है, कैसे जो बहुत सारी जो बीमारियां हैं स्पेशली कोविड के बाद से जो बच्चों में एक डर था कि कैसे हम पार्क या कहीं भी जाते हैं उसके बाद बीमार होने का जो डर था उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से ये पार्क जो बनाया गया है इसमें ये ध्यान रखा गया है जो हमारी व्यक्तिगत साफ सफाई पर्सनल हाइजीन है, जैसे ये साबुन है कि बच्चे यहीं पे गेम करने के बाद जब इधर आएंगे यहाँ से सोप्स लेके हैंड वॉशिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे हमने सैनिटाइजर्स रखवाए हैं जिससे वहीं पे बच्चे तुरंत हैंड सैनिटाइज करेंगे। ये हमारे गेम्स हैं, जैसे एक लूडो का गेम है जिसके माध्यम से बच्चे यहाँ पे बैठ के फन करते हैं, एंजॉय करते हैं और सीखते हैं जो 5 सफाई हैं वो कैसे हम उनको। ये आप देखिए कि ये 5 सफाई यहाँ पर जो है घर और स्कूल बाहर की साफ सफाई के बारे में बताया गया है। जैसे आप देखेंगे बच्चे यहाँ पे लूडो के गेम के माध्यम से सीख रहे हैं कि जब जब कहाँ पे जम्स होते हैं, कब कब जम्स होते हैं। अगर सांप ने काटा तो बैड हैबिट्स है, अगर सीढ़ी मिली है तो ये गुड हैबिट्स है।
ये आप देखिए इस तरीके का जो है वो हाथ धोने के दौरान जो जगह छूट जाते हैं, इसमें तो ये आप देखिए इस तरीके से हाथ को कैसे अच्छे से साफ करें, इसके भी यहाँ पर प्ले कार्ड को शो किया गया है। तो इस हाइजीन प्ले पार्क ये भारत में दूसरा है कि ये चूँकि पूरा जो इलाका है गोरखपुर और बस्ती मंडल वो जापानी इंसेफ्लाइटिस से जूझ रहा है, तो इसके वजह से इस बार सरकार ने भी कोशिश किया है और इस तरीके से जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है उसके ज़रिए जो है वो पूरे इस अभियान को चलाया गया है। एक दस्तक कार्यक्रम को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और उसके ज़रिए जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है उसको जो है वो नियंत्रित करने की कोशिश है सरकार के। किस तरीके से इस स्कूल को आपने सोच के इसको कहा कि इसको अलग बनाएंगे, आखिर इसमें अलग क्या है? अच्छा जी, डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल बेसिकली ऐसा स्कूल है जहाँ पर हम बच्चों को पर्यावरण अनुकूल एक जीवन शैली विकसित कर रहे हैं बच्चों में। जो हमारे देश द्वारा चलाया जा रहा मिशन लाइफ का कैंपेन है उसी के प्रिंसिपल्स पे आधारित है ये स्कूल। और जैसा आपने देखा ये स्कूल फुली सोलर पावर्ड है, हमने सोलर पैनल्स लगाए हैं जिससे ये स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स पूरे सौर ऊर्जा पे निर्भर है अब। और ऐसे हमने एनर्जी एफिशिएंट फैंस और लाइट्स लगाए हैं जिसमें लगभग 80% ऊर्जा जो है एनर्जी है उसका रिडक्शन होगा। हमने ऐसे टैप्स लगाए हैं जिससे लगभग 60 to 70% वाटर वेस्टेज में कमी आएगी। जैसा आप देख रहे हैं बच्चों के पास यहाँ पे स्टेशनरीज है और बैग्स है जो बेसिकली सब रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है। और हमने स्कूल में बेसिकली मिशन लाइफ क्लब का गठन किया है जो जिससे हमारा मेन मकसद है कि हम आने वाले समय में क्लाइमेट एडवोकेट्स या क्लाइमेट वॉरियर्स को तैयार कर पाएँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर ये कार्यक्रम अभी लंबा है, कहीं जाइएगा मत, अभी लौटते हैं। Say আমি একটা নাগা মানুষ চকরা ডি ব্লক হিমা টাউন জনম হলা জায়গা আমার লাগা পেট ফরা ওলা বলে টাইম তেই নাগা মানু খুন্তু বুকি কেনা ওলাইছে গটগটে যাই আছে সব মানু ভাইকো গাই মুইখান লাগা মাইকি খাঙ্গে বেশি মরম কই না চাই সবজি বাল খাবলে মন চকাতে আহিবি খেলাই দিব আপনি কে বাস্তেঙ্গা আখুনি চাই সাবি কোন পিছে পারা আইছে কি কোয়াত নাগা আমি নাগা মানু আছে দে Thank you. From extreme weather-related disasters to a wider spread of vector-borne diseases such as malaria as well as dengue. Now we're going to be talking about how climate change impacts us and our health in every possible way. Yeah, I think, sustainable living, healthcare or any form of awareness about what you eat, how your environment is, everything goes hand in hand. Because आज हम बात कर रहे हैं, diseases की जो climate change की वजह से होती हैं. And any form of disease is in your body अगर आपकी immunity low है. And how do you keep that immunity up? Back in like 100 years back, 200 years back, from the age of Ayurveda, तब लोग दवाइयाँ नहीं खाते थे बट इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एंड इट्स आई थिंक द काइंड ऑफ फूड वी कंज्यूम, हाउ अवेयर वी आर। ऑब्वियसली बेसिक इज़ कि आप अपना खाना अच्छे से साफ़ करके खाइए, अपने हाथ साफ़ करके खाइए, बट वॉट यू आर ईटिंग, द फास्ट फूड कल्चर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आई वॉज रीडिंग समवेयर एंड आई लव दैट लाइन एंड आई इवन पोस्टेड इट सेइंग कि द फास्ट फूड कल्चर has grown so much that real food feels like diet. There's an example being developed which is called the One Health approach. This basically looks at what are the different areas of threat, be it calamities, natural calamities, regional disasters, etc. And we build an understanding of the interface between people, ecosystems, landscapes, what we call landscapes as natural landscapes, and people and beings that live there, for instance, villages, livestock, wildlife, largely to address zoonotic disease transmission. I just want to focus on this because not enough is being said here.
and a lot more needs to be done. We need to strengthen vulnerable rural households and to enhance community access to improve public healthcare for particularly people who live in forest fringe villages and such areas. And the idea is that we can connect this issue of One Health, see where the concentrations are, where possible threats could be, and to improve the flow of ecology and ecological services and the natural flow of what we have as a web of life. Rakul, just moving on, because you said about, what we use in our kitchen, the herbs, but just talking about holistic well-being, the way our country also is, you really are into fitness, you speak a lot about fitness. How important is fitness and how can one ensure, healthy living? And especially if I can ask you that for women as well, because many times we were talking about self-care some time ago, and that's what it was about, that we don't prioritize ourselves. Right. So, fitness is not necessarily just hitting the gym. Fitness is, like you said, holistic. It's finding time for yourself, making sure that you're doing some sort of physical activity. It could be just a walk. It could be just doing some yoga at home. And I hear this many a times where women or people, men also say that we don't find time. But I feel if you can find time to surf on your phone, if you can find time to watch Instagram reels, then you can find time for yourself, because the only place you truly live in is your body. So more the droughts, more the issues with the storage of water. More the water is, used in various ways. And the contamination levels also increase after a period of time. And what it finally results into, the more diarrheal deaths and the more diarrheal cases. So we were actually seeing it only from the lens of when the floods come, then the cholera happens and the diarrhea happens. So it's the first time Reckitt invested very heavily in understanding the impact of overall climate, which also included droughts. Like how with the droughts, the diarrheal deaths and other things will also happen more. So there's a lot to learn from the report, and we are in the future years of our programming. We will be having, more cases, the case studies, what we have done in that direction. According to WHO, climate change is actually going to be the single biggest health threat which is facing humanity. Obviously, there are multiple health effects of climate change, ranging from unpredictable patterns of vector-borne diseases, as Ambika mentioned, increased death rates on account of pollution, higher incidence of fungal infections, and also increased incidence of non-communicable diseases like cancers. But let's talk a little bit about vector-borne diseases, because I think that's a relatively easily understandable, area. Vector is an organism that transmits an infectious pathogen from an infected human or animal to an uninfected human. And malaria, dengue, chikungunya, yellow fever, these are all transmitted by mosquito-borne vectors. If we just think about India, it's a large population. We are 1.4 billion people. Huge geographical diversity. We need to have tools on the ground which are going to be able to quickly screen for disease, quickly be able to diagnose for disease, and have action to be able to, provide better health. The other thing is, can we actually layer climate maps with, different patterns and start predicting where the next outbreak is going to be? And that's going to come from technology and innovation. It's already happening. We're already trying to start layer those maps to be able to say, okay, the next dengue outbreak is going to be here, or the next malaria outbreak is going to be there. And artificial intelligence is being used to do a lot of that. So technology is going to be at the core of being able to respond to what's happening. While we are thinking about how do we curtail climate change, what do we do in terms of carbon reduction, etc. But I think the immediate need for health is going to be able to take these innovations, scale them up. I must say the Indian government, the Ayushmann Bharat Digital Mission is one of the large sort of programs where we have now set up an entire backbone. The government has set up an entire backbone for digital and starting to bring all the information together, create digital IDs, be able to start looking at data from a surveillance perspective. We need to be prepared for the next pandemic. I know we don't want to go there, but we need to still be prepared. I think none of us want to go back there.
but it may happen, and I think surveillance is going to be the need of the day. बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन वो लगातार बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चों को एक मुहिम के तहत, एक जुनून के तहत, एक मूवमेंट के तहत कि बच्चों को ये सिखाया जाए। अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में बात भी हो रही थी कि स्वस्थ कैसे रहें, हैंड हाइजीन, साफ सफाई, इसके अलग अलग तरीके। आप जानते हैं बच्चों को गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है और वो भी मोबाइल पर। हाइजिया गेम को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। रवि, अगर आप बताना चाहें कि ये क्या है। सो रेगुलरली स्कूल से डिमांड आ रहा था कि आप स्कूल्स के अंदर एक्टिविटी कराते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है। इसी के साथ में एक ऐसा गेम डेवलप करना चाहिए आपको जिसमें आज के टाइम में जो न्यू एज बच्चे हैं वो लोग एवतार्स को चूज़ करते हैं, और हर जो गेम है वो 2 सेकेंड्स का एक गेम है। वो गेम के लेवल्स बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे बच्चे गेम्स को खेलेंगे। तो जैसे कैंडी क्रश अनएंडिंग होता है, तो ये जो गेम है वो अनएंडिंग है। और गेम बेसिकली हाइजीन में 5 चीज़ों को फोकस करता है। हाइजीन एट होम, हाइजीन इन नेबरहुड, पर्सनल हाइजीन, हाइजीन ड्यूरिंग इलनेस। फिलहाल ये 2 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी में, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर। There is another fantastic engagement with children that has been the Dettol Hygiene Olympiad, the largest such Olympiad in the country. This year was the 2nd edition, and it reached a staggering 30 million children spread across the country. Ambika. Would also like to start calling the children who have received the award. We start with the top 3 winners in level 1. Could we please have Avreet Kaur, who studies at the Akal Academy School, Baru Sahib, Silmar district, Himachal Pradesh. The next one is Roshan Panika, who has come all the way from Namsai in Arunachal Pradesh. And Somesh Pawar, a young scholar attending the primary school of Athali, which is in Uttarkashi district, bordering China. Pari Sonkar, a dedicated student at the Gorakhnath Kanya Primary School in Gorakhpur, Uttar Pradesh. Naveen, who comes from Pugal, Bikaner, a town near the Pakistan border. And topping the list is Udaya, a student of the government primary school in Puducherry. Hamanur Majkur, she lives in a remote corner of Gujarat's Gir Forest, Jambur village. Our next winner in this category comes from the other corner of India, student of class 5 at the monastery Spituk in Leh, Ladakh. Rounding off level 3 is Sakshi from Ladpur, a village, Kota, Rajasthan. In level 4 is Saran Kumar, who is an 8th standard student from the KAP Vishwanathan Higher Secondary School. Then we have Nikhil Chaube, who is a student of Shri Guru Nath Gorakhpur Sanskrit School. And topping level 4, Safina Batul, a student of class 7, a Madarsa Babul in Amroha, Uttar Pradesh. We have Pema Tamang, a young student from a remote village in Sikkim in the Himalayas. Second rank goes to Fozia Zehra from Jammu and Kashmir, who has become the voice of hygiene and health for her state. And rank 1 is U Dinesh, who belongs to the primitive tribal group of the Chenchu community, Murabad Tiger Reserve in Telangana.